हाय गाइस, वेलकम टू जीएसपीडिया। मैं एक सीरीज लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। मतलब बेसिकली ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मेंस इनरिचमेंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ कंपटीशन वेयर यू हैव टू गेन सम एज। So level of the competition is so that now the every student is having the basic structure and the basic elements of the answer writing. But it is not the time of 2014 and 13 where you are just required to complete your paper and basic structure if you answer. Now everyone is doing that. So you need some extra marks. So what? Because it is a competition. So for that one extra mark, suppose if you in 20 question, if you scored one extra mark in 10 questions, so 10 question a paper and the 40 questions in the four papers, भूल जाओ जीएस उसको भूल जाओ, ऑप्शनल्स को भूल जाओ, और ऐसे को अगर भूल भी जाओ तो 40 पेपर numbers can make you break anything. Okay, so yes, I think enrichment material is the most important thing when it comes to means answer writing. So I will be providing you a series in which we will be giving you it is my first video in which I am giving you quotes of the various scholars and the famous personalities. In the upcoming videos we will be discussing the case studies and the reports of the various commissions and committees. That will be very useful. I will be also discussing uh, the happenings uh, that is important in the current event as a case study for you. Okay, thank you very much. So let's begin. So first we are starting with the Dr. Manmohan Singh. So no power on the earth can stop an idea whose time has come, है ना? तो ये उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स के कंटेक्स्ट में कही थी ये बात। तो वैसे हम ये सोच सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो सकते हैं, है ना? सोशलिज्म को ज़्यादा सही मान सकते हैं, है ना? क्रॉनी कैपिटलिज्म है और वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व है कैपिटलिज्म के साथ में। बट ट्रुथ इज दैट द टाइम हैज कम, है ना, फॉर दैट आइडिया, सो नो वन कैन स्टॉप दैट. Okay, so the statement has been said on that context and you can use in the same context. The second statement is very important. In the matter of state, one have to be full of sentiments and can't afford to be sentimental, है ना? If you are in the administration and either you are in foreign policy or in domestic policy, you are administrator of your district or any policy maker, you can't be sentimental because you can't take your decisions on the sentiments. You have to take your decisions on the rationals, है ना, according to guidelines, according to SOPs and standard operating procedures. But same time you have to be sentimental because you have to be very sensitive towards the depressed class, vulnerable sections, है ना, women, है ना, and same the time with the animals also. Okay, so you have to be sentimental but you can't take your decision into sentiments. That statement goes in that context. Now coming to the Nelson Mandela sir, it seems to be impossible until it is done. तो वो एक बहुत फेमस थ्योरी भी है ना, फेक इट टिल यू मेक इट. तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में जाता है ये स्टेटमेंट कि इट इज seem to be impossible until it is very motivational and for our preparation also, because it seemed to be very impossible to clear the civil service examination until you are a civil servant. If you say in the language one understand, it goes in his mind, but if you say it is in his language, it goes in his heart. ओके, ये होता है ना, अगर कई बार अगर हम सेंटिमेंटल होते हैं या तो हम अपनी लैंग्वेज में ही बात करते हैं. ओके, आइदर इट बी एनी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी और तमिल या मलयालम या जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, मैंडरिन, जो भी है ना. तो बेसिकली ये है कि मदर टंग इज मोर क्लोज टू योर हार्ट. ओके, वर्नाकुलर लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन हो, उस टाइप का कोई इस टाइप की कोई चीज़ अगर आती है तो हाँ आप यूज़ कर सकते हो. एक वेरी फेमस पोएम भी है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल. ओके,
so you can use that also. A good head and a good heart is a formidable combination, है ना. हम वी स्टडी इन जीएस फोर्स ना, जीएस फोर में हम स्टडी करते हैं कि इंटेलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट compassion and the sensitivity and sensitization towards the gender is also more important than the intellect, because if the one person may lack somewhere in the intellect, it is not going to harm very much. But suppose if a person with a good intellect but the bad intentions, है ना, wrong value system हो उसका, तो वो क्या बन जाएगा फिर, है ना, वो समय बिलना दिन बन जाएगा, है ना. तो intellect is good, but compassion and the good heart, but the good value system is very important and essential thing, especially if you are in civil services. Okay, now coming to the Gandhiji, most authentic person, scholar, Mahatma, whatever you can say, you can use him anywhere. Okay, if you educate the man, you educate the person, but if you educate a woman, you educate the nation, है ना. Very important, because the women issues are in your paper in the various topic. I mean, इसे में कई बार डायरेक्टली पूछा जा चुका है, तो इसकी वजह से आप ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, वुमेन्स तो का जो टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हैप्पीनेस इज व्हेन what you think, what you say and what you do is in complete harmony, है ना. तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस एक स्टेट होती है माइंड की, आप शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीएस4 में हम लोग पढ़ते हैं स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप करना कुछ चाहते हो लेकिन यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग एल्स, है ना. यू वांट टू बिकम एन पेंटर बट यू हैव बिकम एन इंजीनियर because society has forced to do you thing. Many of things, many of persons after pursuing his engineering degree come and prepare for the civil services examination, becomes professor and do whatever different things, है ना, after their technical degrees and even medical. So you want to become something, or you want to work in an NGO, है ना, which serves animals, which serve environment, which serve poor peoples, and you are working in a corporate sector and you are indulged in a cat race. So state of mind, है ना, जो आप करना कुछ चाहते हो और आप कर कुछ रहे हो, इसको वो जो स्टेट है इसको बोलते हैं cognitive dissonance. Okay, it is very important. After 30 years and 40 years you will be begin to realize, and the negative thought will come in your mind. It is also a psychological phenomena कि आप सोचने लग जाते हो कि लाइफ का क्या मतलब है, क्या किया मैंने लाइफ में यार, कुछ हो नहीं पाया, है ना. बेसिक डिफरेंस, ये थॉट्स हमारे 20 ईयर के जब आप हो तब भी आते हैं और आप 40 ईयर के हो तब भी आते हैं. बट व्हेन द 20 ईयर्स इट कम्स कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, आप सोचते हो आई विल डू दैट. बट आफ्टर द 40 ईयर्स वंस दीज आइडियाज कम्स, इसका सेकंड पार्ट नहीं आता. आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं कुछ कर नहीं पाया, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि हाँ मैं कर लूंगा, बिकॉज यू आर एट 40, you are at 45. Okay, so happiness is when what you think, what you say and what you do in a complete harmony. वो अगर आप इकिगाई का कॉन्सेप्ट अगर आप चाहोगे तो कभी उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जो जापानीज टेक्निक ऑफ लाइफ है, वो उसका भी बेसिक एसेंस यही है. Okay, so the statements are not only useful in GS papers and answer writing, but it is also very useful in your life. Okay, be the change you wish to see in the world. The statement is self-explanatory. You can use the statement in honesty or the domino effect in the ethics paper. Okay, the next statement is there are people in the world so hungry that God can't appear in front of them except in the form of bread. Okay, दुनिया में लोग इतने भूखे हैं कि भगवान उनके सामने में
सिर्फ रोटी के फॉर्म में ही आ सकता है, रोटी के रूप में ही आ सकता है ना। तो वो एक मैं नाम बोल रहा हूँ लेकिन एक फेमस हिंदी के कवि भी हैं, उन्होंने भी कहा कि एक बंदे ने को 3 बंदे थे, उनको गोली मारी, एक के मुंह से श्री हे राम निकला, एक के मुंह से या अल्लाह निकला, एक के मुंह से ये या ईसा मसीह निकला, और एक के मुंह से निकला आलू। अंतर सिर्फ ये था कि ये बाकी के जो ये 3 थे इनका पेट भरा हुआ था, और जो चौथा था वो भूखा था। ओके, तो you think about the God, you think about the philosophy and the knowledge only after your stomach is full. Okay, there are the people in the world so hungry that they can't appear, the God can't appear in front of them except in the form of bread. The statements have the very deep meaning. You have to think on that. The earth, the air, and the water are not inheritance from our forefather but on a loan from our children. Okay, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो लोन हैं हमारे चिल्ड्रंस को, इससे जिनको हमको विद द इंटरेस्ट, ब्याज के साथ में रिटर्न करना है, ना कि उसको खत्म कर देना है। इट इज नॉट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमको मिला है और वी हैव जस्ट टू कंज्यूम इट। इट इज समथिंग दैट वी हैव एज अ लोन फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस, फ्रॉम आवर अपकमिंग जनरेशंस, जिनको हमको एज इट इज के साथ ही नहीं विद इंटरेस्ट रिटर्न करना चाहिए। बट वी आर डूइंग व्हाट, contrary to that. A nation's culture reside in the heart and the soul of its people. Very important statement, है ना। तो किसी भी देश का जो लॉ होता है, जो सिस्टम होता है, वो वहाँ के लोगों की क्या सोच है, वहाँ का जो क्या वैल्यू सिस्टम उसको रिफ्लेक्ट करता है। लॉ इज इन नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Take the example, if the small girl of 10 years is wearing burqa in the Iran, Iraq, Afghanistan, so even Saudi Arabia, UAE, तो उसको लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, उसको कुछ कहा जाएगा इतनी छोटी बच्ची है, कितना कितनी ज़्यादा संस्कारी है ना, इस्लामिक वैल्यू सिस्टम है इसके अंदर में। विद द सेम गर्ल इज डूइंग दैट इन द फ्रांस, इट विल बी इलीगल, है ना। उसके पेरेंट्स को फाइन किया जा सकता है ना, और वेरियस लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी फैमिली को, है ना, कि वाई यू आर मतलब प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन टू योर चाइल्ड। तो इट इज द जस्ट मैटर ऑफ प्लेस वेयर यू रिसाइड। ओके, द सेम लिबरल आइडिया कैन बी वेरी मच positive for your life in the US, and the same can be very detrimental for you in the North Korea and even China. Okay, so a nation's culture reside in the heart and the soul of its people. A greatness of the nation can be judged by the way its animals are treated. तो बेसिकली ये दो स्टेटमेंट्स थोड़े मिलते जुलते हैं ना, तो फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट को। इसको इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं कि जो कल्चर होता है वो हार्ट में होता है, सॉल में होता है, और अगर हमारा वैल्यू सिस्टम ऐसा है तो हम अदर्स को, इंक्लूडिंग एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को ग्रेटनेस के साथ ट्रीट करेंगे, है ना। तो ग्रेटनेस ऑफ द नेशन कैन बी जज बाय द वे ऑफ इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। ओके, आई डू नॉट वांट माय हाउस टू, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, I do not want my house to be walked in all the sides and my windows to be stuffed. I want the culture of all lines to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. तो बेसिकली गांधी जी ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर के दरवाजे खोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वेरियस कल्चर्स, वेरियस सिविलाइजेशंस की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो हवाएं हैं, वो वहाँ आए, लेकिन मैं उनमें बहना नहीं चाहता। द स्टेटमेंट is in context of debate that is westernization versus modernization. We need modernization but not westernization, है ना।
irrational imitation of the West, because the West are doing the same thing. We will be doing the same thing because they are wearing the same cloth. We are be doing the same cloth, and even a hot climate we are tying the tie. That is not good. That is westernization. If one person wearing his traditional dress enters in his office, others will make laugh of him, है ना? तो वाई क्यों? ऐसा क्यों? है ना? भाई धोती पहनोगे, हवा आएगी जाएगी, हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए अच्छा है वो, दैट्स वाई। कहीं पर भी जो आपका ड्रेस होता है, आपका जो कल्चर होता है, वो वहाँ की जो टाइम और स्पेस होता है उसमें इवॉल्व होता है। जो इवॉल्व्ड चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, है ना? जो फूड सिस्टम है आपका वो इवॉल्व्ड है यहाँ की क्लाइमेट के लिए, आपकी बॉडी के लिए। जो क्लॉथिंग सिस्टम है वो इवॉल्व्ड है इन चीज़ों के लिए, है ना? अब अरब में कोई बंदा है, वहां पर आप कहते हो कि वो रोज नहाए, तो कैसे नहाएगा रोज? भाई वहां पानी को पीने को नहीं मिलता, है ना? तो वो वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन कैसे होगा? वहां पर वेजिटेरियन कैसे होगा? वेज ही नहीं है ना? तो उससे अच्छा क्या है, जो जानवर है उन्हीं को मार के खा जाओ। तो वहां का बंदा क्या है, नहाएगा कम, शॉर्टकट सोल्यूशंस देखेगा, हाथ पैर धो लिया काम हो गया, है ना? नॉन वेज खाएगा। दैट्स व्हाई द इस्लाम हैव such type of values. Hinduism developed and flourished in the land where the abundance natural resources were available. तो यहाँ रोज नहाने का है और वेज खाना है, नॉन वेज मत खाओ, है ना? क्यों? तो ऐसा नहीं है कोई रिलीजन हो या कोई भी चीज हो, कोई भी वैल्यू सिस्टम है, वो क्या है, वो उस एक्लेमेटाइज होता है पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना? तो दैट इज द मोस्ट सुटेबल। तो that is the debate, westernization versus modernization. So we can use this statement in that context. There is no tool for the development more effective than empowering the woman. The Kofi Annan, the same context of the woman, you have to remember the 2 or 3 statements on the women. That's why I have included the issues of women of main statements of the different scholars. The education and empowerment of the women thought of the world can't fail to result in a more caring, tolerant, just and the peaceful life for all. Aung San Suu Kyi. Uh, two statements for the Pakistan, very relevant. In these two statements, you can uh, explain the entire domestic and foreign policy of Pakistan. Pakistan negotiates with the world by the holding the gun on his own head. Give me what I want or I will blow my brain out. Stephen P. Cohen. तो अपने सर पे बंदूक रख के बोलता है वो, डू दैट अदरवाइज मेरे को लोन दो, नहीं तो रग स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर थ्रेट। ओके, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट बहुत रिलेवेंट है, और स्पेशली जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस और जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। Second statement is you can't keep snake in your backyard and expect them to bite only your neighbors. Recently अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी यूएन में यूज किया है, ये हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान में खड़े होकर के उन्होंने ये बात कही थी। You can't keep the snake in your backyard and expect them to bite only your neighbors. The same Taliban is going to hurt you. Okay? The same Taliban will blow out your schools. The same Taliban is going to kill your children. This next statement is from the Bill Gates. It is AI is as nuclear technology which can be used as either as a bomb or as a power. AI जो है उसको हम मेडिकल में यूज कर सकते हैं, और डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए पैथोलॉजी जो होती है उसमें यूज़ किया जा सकता है, जीन सीक्वेंसिंग की जा रही है, एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता है ना? सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है ना? तो वेरियस फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में भी इवन वी कैन यूज़ द एआई फॉर द
पर्पज आप कभी हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर में एआई का क्या यूज है। तो it can be used in various field for the positive things, but at the same time it can be used as a bomb also, because if it goes in the wrong hands, if the terrorism is using that, if authoritarian rulers are using that, if the attackers are using that for the stealing your data, okay, same time it is being used as that it is resulting in job losses. So the same technology, anything have the two sides. This, it goes with not only with the AI but the anything साइंस। हम तो बचपन से साइंस में लिखते आ रहे हैं ना, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है ना, तो वो सेम सेम कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो जस्टिस डीवाई चंचूर says about the talent tolerance. Intolerance have the chilling effect on the right to speech, which plurality is the beauty of the democracy. Plurality is beauty of democracy, and intolerance have the chilling effect on the right. The self-explanatory, and Justice D.Y. Chandrachud is very famous for his dissenting notes. So one of the very famous judge, and basically the Supreme Court have right to explain the value system of the Constitution. So this is very important statement in context of tolerance, freedom of speech, and same thing with the essence of the democracy. In all the three fields we can use it. But Walter Benjamin, no document of the civilization which is at the same time document of the barbarism. And every document, even it is constitution or any religious documents, take the example of the Quran, can be used same time as a document of peace and the same time as a document of the barbarism. It can be used to spread the peace, and it can also be used to spread the barbarism. The same constitution can be used as a wrong tool in the hand of wrongdoers. Okay, we have seen it in various cases in various countries. Coming to the very famous scholar Kalam Sahab, a nation dies without the vision. What Einstein says, education is not learning of the fact, it is a training of the mind. You are not need to just mugging up the things and memorizing. Exactly what the UPSC also wants from you. Education is not learning of the fact, it is the training of the mind. You should learn how to think, because they are not asking you the mugging of facts, because you are not a clerical examination. You are a top most examination. Exactly, we do the same thing. We all the we all keep doing collecting and collecting the materials, but we do not invest our uh, time in the digesting the material and the generating the thoughts in your mind. That is very important. So next statement is, try not to become a man of success but a man of value, है ना। वो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि इंटेलिजेंस के साथ में वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कंपैशन, जेंडर सेंसिटिविटी टुवर्ड जेंडर्स, डिप्रेस्ड क्लास, है ना, इवन इन्वायरमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट इज goes with that context. What confuses is, when your conduct is determined by the consideration of the profit, you will arouse the great resentment. You can use that statement in GS4, है ना। तो जब आपको प्रॉफिट की बात यहाँ पर आएगी तो you will definitely arouse the resentment among the masses in your department or anywhere else. So what we call the conflicting interests. Now comes Baba Sahib. Baba Sahib is the most important scholar after the Gandhiji. You can use him anywhere. Even the Gandhiji can't be used in the matter of the caste and in the matter of women's, because
he was more or less stereotype when it comes to depressed class and women's. But Baba Saheb, what a lot he did for the emancipation of the socially backward classes and women's. So we often credit him for the depressed class emancipation and affirmation, but we often forget what he did for the women's. He did a lot for the women's, for the emancipation of the women's and women's right. So we should uh, do that also. That's why, yeah. I have included his women led statement also in this PDF. Social justice is not merely a welfare policy framework, rather, it is a dynamic tool to generate the revolutionary political consciousness among society, socially marginalized people. The next statement is I measure to I measure the progress of a community by the degrees of progress its women have achieved. Okay. The next statement is men are mortal, so are ideas. Ideas needs propagation as much as plants need watering. Without it, both will wither and die. That statement is very crucial and relevant in the present context. What ideas and the value system Baba Sahib Ambedkar propounded and taught us is now withering because we are not giving them water of thought. We are not giving them water of dedication toward his values. Men are mortal, so are ideas. It is not that men are mortal but idea remains for long. No, it's not that. Idea needs propagation. Idea needs the water as the plant wants. The statement is very important in present context. The single statement defines how the politics of depressed class in bad position in India and how we have failed to water the idea of emancipation of the women and the vulnerable sections of society. The next statement is of Henry Kissinger is very important for the context of the US foreign policy is to be enemy of America is a dangerous but to be friend of America is fatal. That goes with various examples. Take the example of Ukraine. So I just included the statement in this lecture just because the Ukraine is in news and Afghanistan was in news. So the statement is very relevant that can be directly be used in your paper. Is because you can see the how the America has converted Ukraine in a young state. It is a failed nation now. It has been destroyed. Not yet to be destroyed. It has been destroyed. You can take the example of how the invasion of I will say illegal invasion of the Iraq, illicit invasion of Iraq gave birth to the ISIS. How the US uh, destroyed Pakistan, I would say. So being friend of US like the Ukraine and Pakistan is going to be fatal for you. That's why in our foreign policy you will see an independence, not the alignment with the America. It is not that we don't they don't want to ally with us. Who will not want to ally with the such a big country, with such big power and nuclear power and third largest economy of the world? But we don't want to ally with the America because it is fatal to be friend of America. Itself Henry Kissinger, ex-US president, said it. Thank you very much for the watching video. If you like the video, please like, do subscribe and share because your support is very necessary to grow on this platform. So please subscribe and share. Thank you very much. We will be coming up with the next videos on the case studies and the various enriching materials. Thank you very much.